everyone. So finally, I'm having my mentor with me, the one with whom I've learned everything, and she's none other than Miss Rupa Ma'am. Hi, Rupa Ma'am. Hi, Ujjwala. How are you, ma'am? I'm I, really lucky to have you as my mentor. So, I'm how are doing you? awesome, and thank you so much. And I feel so good that my students are, reaching at the next level and learning so much from me. Thank you so much. Ma'am, actually, I wanted others to know about this healing modality because it is a new modality which is coming in front of everyone, and there are many people who are not even aware of such modality. Everyone is saying that it is not true that miracles happen like this, and nobody is believing in this healing modality. So, ma'am, how difficult was it for you to join this modality, and what will you tell others about this modality? Yeah, actually, I was always right from my childhood in my house. It was always go natural. My father was always into healthy eating, so that seeding was there already from my childhood, and my even my family members like my uncle, my aunt, my so many of my family members also are into this. But thanks to my uncle, like my mamaji, would introduce me formally to SSY, and that then I learned meditation, I learned pranayama, I learned the healthy food eating. That was long ago, almost 30 years ago. And slowly also it was my journey. I had a lot of health issues many years ago, and there was this quest that how do I heal myself naturally, something. So I kept learning, and there is no doubt. I mean, first thing when I hear about healing, the word is I surrender. That's the first step. Wow. Yeah, the moment you surrender. I also tell whenever people come with a doubt to the system that unfortunately, say suppose if there is a event and somebody had to undergo heart surgery, and there's a famous hospital in Bangalore and the famous doctor, would you go with the surrender bhav or you doubt the doctor? You won't, right? The same thing is applicable here. And my formal education also was with acute touch healing science. It's amazing 8,000 years old ago science. And there used to be a healer coming to our society, and I saw magical transformation just in front of my eyes. Somebody's HbA1c was 12 and that reduced to 5.5. Somebody's psoriasis of the skin, 23 years old psoriasis of the skin, she was suffering, and that completely cured. So when I saw magical transformation, and I got so curious, I opted for a year-long diploma, and I surrendered to my guru. We were 108 participants, and what a transformation. Yes, for me, I know the system works. Just that because right from my childhood, I always into natural, something heals naturally. And to all the people who are watching this, watching to me with listening to the podcast, surrender. It works. It works. It works. That's all I have to say. Awesome, ma'am. Awesome. Even I used to believe that all this is a myth, but even I, after coming to you, I have myself felt that it works. It So, does. ma'am, Yeah. what do you think chakra healing is all about, and is it possible to, cure our diseases using chakra healings? Absolutely, absolutely. And there's so many modalities, and chakra healing is one of the powerful modality which I use for my students to cure, to heal. And there are various chakras in our body, and the science behind the chakra healing is it's the sound. Sound has amazing healing power. And chakra healing, we chant certain mantras in a certain particular way, and see, even before we are born, we are exposed to the sound. हमारी माँ के गोद में है, कोख में है, and we already hear our mother's heartbeat. The sound has amazing healing power. And chakra healing, we chant the certain mantras and balance all the seven chakras. And it is a couple of testimonials I would like to share. One of my students, she had frozen shoulder from so many years, more than 10 long years, and second session of chakra healing cured. And the student had lower back pain, and that got cured. Third student has had tinnitus, tak tak tak, कान में आवाज आती है, and he thought probably it is cancer, tumor.
something he was all thinking, and that got cured. Yes, balancing the energies through chakra and also the power of sound. 70% of our body is water, and because of the blockages in the energy, there is health issues. So with the chanting of the mantras and balancing the chakras, one becomes super healthy. Wow, amazing. This is a really very beautiful science. And when I used to meditate with you, na, I used to feel that calmness in my mind and the Absolutely. positive aura which is surrounding me, the positive vibes which are surrounding me. Yes. All thanks to you, ma'am. And Welcome. ma'am, what do you think, ma'am? Why many people are, why they are feeling so much difficulty in meditating? Because whenever we say that you should meditate, nobody is like meditating properly. They're always feeling like नहीं meditation में ना नींद आ जाती है, meditation में दिमाग में 10 ख्याल आ जाते हैं and so on. They're having problem in meditation. So what are your views on this? Yes, that's a very good question. When my health was going bad and I had a lot of health challenges, I was working in a corporate IT company and I had a team to manage and a high stressful job. And I said, ठीक है, एक छोटा सा IT job ही तो है मेरा, and I'm an IT professional turned wellness coach and I'm doing healing. So Wow. yes, then I started reading about high achievers, and I read about Bill Gates, अपने मोदी जी, धोनी, A.R. Rahman, Kohli. The one pattern I saw in all of them is they meditate regularly. विराट कोहली, धोनी, एवरीबडी, एंड ए आर रहमान तो अपने कंसर्ट के मेन इंपॉर्टेंट कंसर्ट के पहले 2-2 घंटे मेडिटेशन करते हैं. सो दिस इज द पावर, बिकॉज सी वी एक्सरसाइज आवर फिजिकल बॉडी बाय डूइंग योगा, वॉकिंग, रनिंग, एवरीथिंग. व्हाट डज दैट वी डू टू काम आवर माइंड? अपनी माइंड को भी तो एक्सरसाइज करना है बाय मेडिटेशन, एंड उसको हॉलीडे पे भेज देना है. एवरी डे 10 minutes टू स्विट्जरलैंड एंड कम बैक, और टू सम हॉलीडे नाइस प्लेस एंड कम बैक. So this is otherwise. And how to meditate? It is very simple. You just have to practice. See, when we were small kids, we started walking, we fell down, and again we started. And so meditation is the same. And when I personally, I want each and everyone to meditate. The right age is age of 7 and 8. And when in fact, my vision is to coach all the young generation. And when I share this to my nephew, he's 20 years old, and he's like, Auntie, maybe you talk to Ajja Ajit, they would be interested. So meditation means people think थोड़े से सफ़ेद बाल होने चाहिए, at least few gray hair, and then no, start at a young age. And today's generation, it is just not the same like my generation, where used to just leave the book, school bag, and go to play and have fun. They're having a lot of stress. So it's even more important to meditate at very young age. And it's very easy. The more you practice, earlier days for me, it used to take like 45 minutes, 1 hour to get into that meditative state. Now within 10 minutes, sometimes even 5 minutes I can reach. I've trained myself. It's just a matter of training yourself. Wow, ma'am. And ma'am, how to focus in meditation? Because meditation करते हुए दिमाग में there are many thoughts coming inside our mind. Yeah. So, how to focus? Yeah, I'll give one simple technique to everyone. So you can also do along with me. Meditation Sure, is the ma'am. more you focus on your breath, more you focus. This is my own innovation. So it's all about, क्योंकि ऐसे आँख बंद करके बैठना meditation है, लेकिन thoughts बहुत आते रहते हैं. One way is just let them come and go. Kind of, that is one way of doing. Now just focus on the breath. Do like this. Hold your index finger and just breathe out. Breathe out. Close your eyes now and breathe out. क्या हुआ? कुछ चेंज हुए? Something shifted? Yeah. Nothing was coming in my mind actually. I was just focusing on the breath. Exactly. So the more, in fact, just this technique of breathing out and focusing on your breath, just focus on a breath for few weeks, few months, then you will learn how to easily meditate without getting distracted. This is the best way to train it. In fact,
all the time you are awake, you have to always uh, just little bit focus on your breath, so that you are aware, and you more and more you learn how to calm yourself. Exactly. Ma'am, one thing you told in the class that we should be focused on like eating whatever which is healing us from Yeah, inside. correct, So correct. whenever we go out, we have a craving like यार आज तो मुझे गोलगप्पे खाने हैं, कोई नहीं आज एक दिन खा लेते हैं ना बाहर. एंड वो एक दिन की वजह से ना हमारी हैबिट हो जाती है, वी टेंड टू ईट आउटसाइड मैक्सिमम. There are many occasions जहाँ पे we are eating outside. So how to control that craving? Yeah. So I also love golgappas. One must eat. One must eat because these food makes us happy. हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं रेगुलरली आइसक्रीम भी खाती हूँ. बट इट इज़ लाइक 1%. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ first what we have to do is follow 80-20 rule. So 80% of the time, if you are sticking to your regular healthy food, healthy diet, healthy everything, then 20% if you eat pav bhaji, pani puri, golgappa, chalega. That's perfectly fine. So कुछ नहीं होता है. एंड उसके साथ फिर अगले दिन कुछ डिटॉक्स कर लिया, थोड़े से वॉक पे एक्स्ट्रा चले गए, तो कोई बात नहीं. वर्सेस if you are doing this not 80 but 50-50, then there is an imbalance. So 80-20 rule is a simple rule to follow. अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब भी मेरे ट्रैवल पैकिंग में होता है, नट्स कैरी करते हैं, फ्रूट्स होता है, एंड देन लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रैवल है तो आई क्विकली फाइंड अ नियर बाय शॉप, फ्रूट शॉप, एंड देन आई बाय एंड स्टॉक इट अप. सो वहाँ एंजॉय भी करना है फूड, बट अपने जोन में रहना, अपने जोन में रहना हमेशा. You just have to look, is this food healing me? Is this food healing me? This should be the thought process always. Today, after so many years of training, abhi if I pass through the bakery, I'm like, this food, maybe next time. This is me now. So if I can do, everybody can do. So yeah. मैम वन क्वेश्चन मोर. Yeah. जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स से भरी हुई रहती है. बिल्कुल. सो ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके they achieve that position. What kind of obstacles you faced in your life in this modality? This modality initially, that's what first they laugh at you, and then after 5 years there's a big queue and there is a waiting list. This is exactly what happened with me initially. Like ये क्या healing क्या होता है, ऐसे थोड़ी ठीक होता है, बिना दवाई का ऐसे कैसे होता है? Because people are okay to take कड़वी दवाई versus I'm here to coach and tell them that दवाई कम करो, दवाई ये करो, टेपर करें. I spend a lot of time on counseling because the other huge respect to other streams, उनमें they work on the fear factor. उनका fear factor क्या रहता है? दवाई नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा. तो हमारे यहाँ क्या रहता है? दवाई लिया तो ये हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा. This is our system. So yeah, initially there is always a resistance I did have. But I was lucky that I started with my friends, family, extended family, and then they spread the word around. That's the best way to start your healing journey and to share to the world. And I started sharing every bit of my wins, and they have seen me transformed. I was just not like this before. I was a different Rupa earlier. So when they see me कि अच्छा मुझे भी रूपा जैसे बनना है, so they ask me what do you apply for your skin, what do you do for your hair, all the ladies typically, and yes, everything natural. They know me, so everybody now come to me and I say, what is your lifestyle and what do you do? So initially there is a resistance because we are going against the main this thing. Huge respect to all streams, but our healing this thing is not just healing, it is also 360 degrees overall holistic health, right? We work on the mind, on the food habits, the sleeping pattern, balancing the energies. So they get a whole package here. And because mainstream, other streams also huge respect, but they're अच्छा thyroid है ये दवाई लो, diabetes है ये दवाई लो, कम नहीं हो रहा है बढ़ाओ. That is nobody is addressing the root cause. Here we are addressing the root cause कि क्यों हो रहा है, what is the root cause.
cause, and based on that, when also so many testimonials are there, when they see the testimonials, and then my students will then refer to there. Yes, initially it was a challenge, definitely. मैम आपने इतने सारे लोगों के साथ डील किया है who are having diabetes. So is it true डायबिटीज सच में खत्म हो सकती है इंसान की लाइफ से? बिकॉज जहां तक हम सब ने सुना है डायबिटीज इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज जो कि पूरी जिंदगी में रहती है. सो इज इट ट्रू दैट इट कैन बी एंडेड ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द रूट्स? डेफिनेटली डेफिनेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको माइंड से हटाओ. मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज जो भी होता है, आप मेरे पास आते हैं फोन पे या ऐसे मिलते भी है तो आई एम डायबिटिक, यहाँ से शुरू उनकी दे आइडेंटिफाई, उनकी अटैचमेंट हो जाते हैं. ये मत बोलो पहले आई एम डायबिटिस, लाइक एक अफर्मेशन लिख रहे हैं आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक. तो वहाँ से माइंड से रिवायरिंग शुरू करना है. एंड यस, डेफिनेटली इट इज़ रिवर्सिबल एंड इट इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल एलिमेंट, इट इज़ नॉट अ डिसीज एट ऑल. मेजॉरिटी पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, एंड ये सब चीज़ें रिवर्सिबल है. इसका जड़ से हटाइए. व्हाट इज़ अ रूट कॉज? फॉर एग्जांपल कई केमिकल्स जो हम रेगुलरली डे टू डे यूज़ करते हैं, सोडियम लॉरेट सल्फेट, लॉरिक एसिड, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंड स्ट्रेस इज़ द रूट, टॉप लेवल, अपर, एकदम ऊपर का लेवल है सब डिसीज़ के लिए. when I do one-to-ones with my beneficiaries, my students, थोड़े से ओपन अप जब हो जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं डीप इमोशनल इनका कोई ट्रॉमा है, मेमोरी है, उससे होता है उनको. एक स्टूडेंट आए थे कोरोना के बाद, और she had messaged me, she has diabetes and thyroid and she wants to now lead a medicine free life. So she started the journey with me. So 12 हफ्ते का जो हम प्रोग्राम करते हैं, 1-to-1 सेशंस. So second, third में जब open up हो जाते हैं, तो the reason was 5 years ago she lost her husband, and corona के time में she lost her dear sister. So this trauma she was carrying, उसकी वजह से उसको तो धीरे धीरे करके ये मेजॉरिटी, अगर किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसी का वेट गेन नहीं हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ इश्यूज आर बिकॉज ऑफ सम डीप मेमोरी ट्रॉमा. उसके जो सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, तो उसकी रिवायरिंग कैसे करना है थ्रू हीलिंग. ये इसकी जब कोचिंग होती है तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है. Right. And ma'am, it is very important for everyone to know that healing is not one day task, and it is a process. And without learning, you cannot move ahead. You always need a mentor. Like I am having a mentor in your form. So obviously, please मेरा सबसे ये निवेदन है, खुद कुछ भी ट्राई मत कीजिए. Have a word with your mentor. रूपा मैम है हमारे साथ. अब आप सबको भी पता है कि रूपा मैम है. प्लीज आप गाइडेंस लीजिए एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स जो एक गुरु ही आपको गाइड कर सकता है, भले ही कोई भी मोडालिटी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वी टेंड टू डू मिस्टेक्स. एब्सोल्युटली. क्योंकि देखिए, हजारों इंस्टा रील्स होते हैं, हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं. इतना आसान था तो पूरी दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद करने पड़ते. दुनिया में कोई सिक नहीं था, कोई मोटा नहीं था, कोई पतला नहीं था, किसी को भी डायबिटीज नहीं होती. तो देयर इज अ गैप. एक गुरु की जरूरत है, एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तब भी आपको, एंड खुद से जितना भी ट्राई कर ले आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता एग्जैक्ट एक पूरी रेसिपी नहीं है आपके पास. क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कुछ आया, गूगल से कुछ उठाया, नेबर ने कुछ बताया, इधर का कुछ बताया. तो इसमें लेटेस्ट आ रहा था करेला डांस, मतलब करेला जूस को एक टब में डालो, उसमें डांस करो, उससे डायबिटीज कम होगा. ये एक वीडियो वायरल हो रहा है. तो ट्राई कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्राई. जरूर मजा तो जरूर आएगा पक्का. और कटहल की आटे की रोटी खाओ. Everything, yes, but these are all bits and pieces. There is no complete recipe here. So get a coach and a guru. Yes, what Vijula is saying is exactly true. Perfect. And also you got to do this for at least 3 to 6 months to 1 year consistently. और कई लोग पूछते हैं एक बार कम हो गया, दवाई छूट गई, फिर से हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा. अगर आपने जो हमने जो पूरा रेसिपी बताया है आपको,
पूरा प्रोटोकॉल बताया और फॉलो नहीं किया तो फिर से हो सकता है। जैसे किसी ने मान लीजिए 20-30 किलो वेट लॉस कर लिया और सारे में हमारे जो प्रोटोकॉल्स है सब फॉलो कर लिया, हीलिंग हो गई, डाइट हो गया, एवरीथिंग, एंड देन दोबारा जाके रोज पाव भाजी खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, तो यस इट विल कम बैक, इट विल कम बैक। It is a machine. In our healing modality, there's a process there's a system which we coach and train, and उसको फिर आप उसी सिस्टम में रहना है, उसी जोन में रहना है, और उसके बाहर गए तो फिर अगेन। Exactly. Nowadays, I've even seen mothers, उनके बच्चों को भूख लगती है, what they are doing is, यार चिप्स खा ले, नमकीन खा ले, छोटे छोटे केक के पैकेट्स होते हैं दैट ब्रिटानिया, वो देते हैं, कोई बात नहीं ये खा लो, बट दे आर नॉट गिविंग समथिंग हेल्दी। यू नो व्हेन आई वाज इनटू दैट टीचिंग लाइन, इवन आई, जब मैं बस में जा रही हूँ मॉर्निंग में, बच्चों को ना वो चिप्स के पैकेट दे के, एंड बस में वो बच्चे चिप्स का पैकेट खोल के दे आर ईटिंग चिप्स इन द मॉर्निंग, एब्सोल्युटली अनहेल्दी। it is once in because आप ही अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो what I mean, उनका हेल्थ कैसे सुधरेगा? So Ujjwala, you can take this initiative और अपने बच्चों को हेल्दी, this is something, there's a huge gap here I feel, because पेरेंट्स का हमेशा मेरे बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो कंप्लेंट रहता है, बट एड्रेस द रूट कॉज, क्योंकि exactly. And majority also who come to me, they say everything we are doing healthy, like for example डायबिटीज हुआ, मैडम मैं सब कुछ हेल्दी करता हूँ, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट नॉन वेज, फिर भी हुआ मुझे, और बच्चों में कुछ IBS के इश्यूज है, एवरीथिंग वी डू हेल्दी एट होम एंड स्टिल वी गॉट, सो दैट मींस यू नीड अ कोच हियर, बिकॉज़ देयर इज अ गैप, कुछ तो गड़बड़, इतना सा कुछ तो गैप रह रहा है, एंड दैट्स व्हाई IBS इतने सारे लोगों को हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका जड़ क्या है? हमेशा address the root cause, and yes, unhealthy food, packed processed food is one of the root cause. Nowadays children are liking that. दूध सादा, मेरे हिसाब से तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, जैसे आपने गाइड किया कि दूध पीना ही नहीं चाहिए, बट दिन में मॉर्निंग में सबसे पहले व्हाट मदर्स आर डूइंग इज मिल्क देते हैं, उसके साथ बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, वो सब घोल के दे आर मेकिंग इट मच मोर अनहेल्दियर. Yeah, so see, mothers, yeah, these packed healthy drinks, so-called healthy drinks में उसके एक तो get into this habit. This is the message to all the mothers. आपके healthy बच्चे हमारे देश के future है, right? तो get into this habit of reading every ingredient, every line of ingredient. उसमें E105, something सब जो numbers होते हैं, these are harmful toxic chemicals, preservatives, enzymes होते हैं उसमें. So then you are feeding, बिस्किट खा लो जब बोल रहे हैं, तो एक केमिकल दे रहे हैं आपके बच्चों को खाने के लिए, versus an apple or a fruit or a nuts. So healthy snacks बनाइए, घर पे बनाइए, और ये जो ये so and so is the secret of energy और आपकी हाइट बढ़ेगी, nothing. Just read the ingredients, ये किससे बना है, and milk तो we highly say recommend no milk, and instead go for vegan milk like almond milk, soya milk and coconut milk. और ये जो products है सारे, इसमें एक तो sugar बहुत रहता है. That's also the reason kids go a bit hyper because there's too much sugar in the system, and sugar has around 23 odd chemicals, and one of the chemicals sugar में होता है sulfur, और आप सबको पता है sulfur फायर क्रैकर्स में बनाने के लिए यूज करते हैं. So do you want to feed your child some chemical, starting the day with some chemical? So what is happening is, knowingly, unknowingly, we are either eating or applying something on our skin or inhaling some chemical throughout the day. So go natural, stay healthy, and reduce all possible chemicals drastically in a day-to-day life. घर पे बनाइए, आपको बच्चों को कुछ इसमें डाल के पिलाने का जो आदत है, तो get all the multigrains, रागी है, नाचनी है, ये है, उसको घर पे मॉल्ट बनाइए ना. You may half an hour extra time लगेगा, बट घर पे बनाइए. Exactly. Awesome, ma'am. Awesome. बहुत सीखने को है आपसे, and I would really recommend you all to
प्लीज गेट इन टच विद मैम एज वेल, क्योंकि मैम के पास जितना ज्ञान है ना, लिटरली मेरे को तो मजा आ जाता है मैम से बात करके। आई फील सो मोटिवेटेड एंड आई फील कि यस, लाइफ में ना कुछ बोरिंग नहीं बचा है। यस, आई डू अग्री कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, डिप्रेशन लगता है। इवन आई वॉज इन टू डिप्रेशन, आई केम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, एंड मैम से बात करके तो आई वॉज लाइक, it completely changed my mindset rather. And ma'am knows that फर्स्ट डे क्लास में मैं कैसी थी। आई वॉज सो वरिड कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। बट येस, नाउ आई एम फीलिंग सुपर कॉन्फिडेंट। एंड बहुत बड़ा रोल है मैम का भी, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने जो बताया वो मैंने अप्लाई किया उस चीज का, बिकॉज मैम का क्या काम है, मैम बता देंगी। मैम घर पे नहीं आ रही है देखने के लिए कि यस उज्ज्वला इज डूइंग दैट, जो भी बताया है या नहीं कर रही है वो। तो सिर्फ सुनना समझना नहीं है, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। Absolutely. I have to say Ujjwala is one of my best student and complete surrender भाव से वो क्लास में आई है, and every bit she's been learning like a curious little kid and immediate in implementation. आप हजारों कोर्स कर सकते हैं, हजारों हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हैं, हजारों यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एंड यस, गेट अ कोच, गेट अ गुरु, गेट अ मेंटर एंड डोंट सफर इन पेन, डोंट सफर इन पेन। एंड जितना सीखना, बहुत कुछ है सीखने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट करके ईच वन शुड हैव अ अल्टीमेट गोल, सुपर हेल्दी मी, सुपर हेल्दी माय फैमिली। अल्टीमेट गोल होना चाहिए सबका। That's awesome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you so much, ma'am. आपने इतना कुछ आके बताया हमें एक राह दिखाई कि yes, you have got a life जहाँ पे actually life का मतलब है living to your full potential. Because अगर हमारे अंदर diseases हैं, we cannot live completely. हम पूरे जॉली होके हम लाइफ के मजे नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल हेल्दी है तो सब कुछ है, हेल्दी नहीं है तो it affects your health, it affects your relationship, it affects money, it affects career, all areas of your life. So health is wealth, super healthy रहना ये ultimate goal सबका होना चाहिए। And that too without doctor it is possible. Without doctor it's possible. Become your own doctor. Become your own doctor. But with a guru. With the guru, yes. But with the guru. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच मैम, आप पॉडकास्ट में आए, आपने हमारी आंखें इतनी खोली। हमें आपकी गाइडेंस हमेशा लगती रहेगी एंड डेफिनेटली वी विल बी कमिंग टू यू। जहाँ पे भी हम अटक गए वी विल बी कमिंग एंड वी विल बी टेकिंग योर गाइडेंस मैम। थैंक यू so much Ujjwala, all the very best to you. Thank you so much ma'am, thanks for coming.